Mr. Gadkari permits, and you can also perhaps ask him some questions. Mr. Gadkari needs, of course, no introduction. He's one of the most dynamic ministers in our government. More importantly, what I always find fascinating about him is that in many ways, he's the ideas man in so many of our core sectors when it comes to, I mean, especially in transportation, roads, highways, automobiles. And a lot of the ideas that actually you will first hear from him, if you go back to some of his speeches 4 or 5 years ago, many of the ideas that he comes up with are the ones that later becomes mainstream, prominent, and very widely adopted. We are delighted to have you with us here today, sir. Thank you so much for joining us. We are, of course, talking manufacturing today. But to kickstart, I want to ask you, if you could tell us a little bit about the kind of measures that India is doing to enable manufacturing by way of infrastructure support. Actually, in our GDP growth, 12% contributes from agriculture, 22 to 24% from manufacturing sector, and 52 to 54% from the service sector. The 12% which is coming from agriculture, our 65% of population belongs to agriculture. And that is to be a big challenge for the country. The people who are socially, economically, educationally backward, particularly rural, agriculture, tribal and forest area, where we need to create more employment potential and growth rate. So we need to identify which are the technology by which we can start manufacturing in the agriculture rural area to create employment potential at the same time to create growth for the country. And I am working on that. And we need to identify the different fields. Suppose, for example, taking example of fossil fuel, we have import of 16 lakh crores for fossil fuel. Now in the forest area, in the westland, the plantation of bamboo is there. We are appealing people to make more plantation of bamboo. Now you just understand, one of the Bhima bamboo from Karnataka, after 2 years, it gives 200 ton per acre. Even the land available, westland with Coal India, the Western Coal Field, Manganese Ore of India, anywhere, the barren land is there. And the bamboo is such a plant where you don't need any water and other thing. So there is a huge potential of biomass is available. In Assam already Indian Oil has started making bioethanol from bamboo. Then other important thing is very popularly related with Delhi, that is parali, rice straw. So we have now 10 projects where we are making bio CNG, bio LNG from parali. But parali rice straw taking into biodigester, we can get methane. And from methane, we can get hydrogen. So hydrogen is the fuel for the future. The third important thing is in Panipat, the Indian Oil has got the project where from parali, rice straw, they are getting 1 lakh liter of ethanol per day and 150 ton of bitumen. Now just few days before, 3-4 months before, CSR and Central Research Road Organization, they have already invented and proven technology that from rice straw, we can get 70% biobitumen and 30% biochar, the name as organic carbon, which is very important in agriculture. Now I am a farmer. When there is 0.80% of organic carbon, I get the sugarcane crop, 85 ton per acre in my own farm. So now we have a tractor molded unit. In Orissa, first road, we are also using that bio-bitumen. And that bitumen is proved to be, this is given by the laboratory report, is proved to be better than petroleum bitumen. In India, we have a requirement of 80 lakh ton of bitumen. Out of his Indian refinery is giving only 50 lakh ton and 30 lakh ton is import.
In place of that, if Punjab and Haryana, the tractor molded unit will be there. And I am going to start this scheme within 3 months. And there will be a scheme that tractor molded unit of 15 lakh rupees, they will manufacture bio-bitumen, and we are ready to purchase whatever the quantity they have for the road construction, and by which we will create jobs. We will reduce the pollution of Delhi because of pearly burning, and it is the idea of conversion of waste into wealth. So there are two types where I will feel that we have to divide into two parts. One where we will start manufacturing in the agriculture, rural, tribal and forest area. What are the technology, what are the products, what products we can export, what products we import substitute. That is exactly the most important thing. And I feel that this is the time that we should concentrate on rural India, and that is only the way to make India Atmanirbhar Bharat. The problem is that I'm not blaming you, but total urban area, the total ideas and everything is centric to the urban problem, urban development. And actually, sometime I remember Sharad Joshi, the former leader at that time, he was telling Shetkari Sangatna. He was telling India and Bharat. Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai is India, and these all small rural areas Bharat. That is not exactly I want to discriminate anything, but our government has given highest priority for development of 500 blocks and 124 aspirant districts, where we are making connectivity. We are seeing that there will be power will be available, water, power, transport and communication will be available. And there we want to make industrial investment by which we will increase the growth rate, per capita income and employment potential. And that is to be priority wise we have. But at the same time, in the urban area also, for manufacturing sector, there is a huge potential. I am just telling you about my ministry. I am related with the automobile industry. Now, previously our number was 4, but now we bypass Japan and our number is now number 3. The China number 1, USA number 2 and India is number 3. And now in manufacturing, my dream is to make this industry within 5 years number 1 automobile manufacturer hub in the world. Presently, the size of this industry is 7.5 lakh crore. And this is the industry which has already created 4 crore jobs. This is the industry which is giving maximum revenue as a form of GST to the state and central government. So now idea is all reputed brand in the world, ekade ko chhod do, all are present in India. And now they are increasing their production. Tata, just yesterday I have a program with Tata MD, Shirish Wag, and he was telling me, I was telling him that you should increase your electric vehicle capacity by 100 times. This is the market. He has got a waiting list. So they purchased a new plant and now they started electric manufacturing there. So in electric vehicle, electric truck, electric scooter, now we have 400 startup, small in Bareilly, Kanpur, Lucknow, they are making electric scooter. So the way in which using the new technology, new innovation, new research, there is a huge potential. And there are two things which are important for increasing manufacturing in India, creating more employment. The two important things is technology. Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. That is one thing. And second thing is no material is waste. We need to have a policy by which conversion of waste into wealth. Just I will tell you the example of Mathura. Please. Where we are using 80 MLD sludge of Mathura. The model is hybrid annuity, and the clean water we are giving to Indian Oil, and they are giving 20 crore rupees per year as a loyalty. So now we can make the solid waste management, liquid waste management economy of 5 lakhs crore. Now in Ahmedabad, Dolero Road, Express Highway, we are taking 20 lakh ton of garbage of Ahmedabad Municipal Corporation and using in that.
Now from rubber powder, we have now make it mandatory that in bitumen, it is to be mandatory that they have to use 15% rubber powder in bitumen. And now we are getting bitumen rubber powder from the West tire. So this type of conversion of waste into wealth and conversion of knowledge into wealth, by using two philosophies, we can increase the proportion of manufacturing sector to create more jobs and resolve the problem. But we need to identify the sectors, and it's my personal opinion is we have to divide in two parts. One is urban centric and rural agriculture centric. Actually, sir, on the matter of biomass, I happened to be speaking to someone from NTPC the other day. तो वो कह रहा था कि उनकी boilers में they are also adding biomass pellets Yes. in addition to coal, and it's reducing emissions and helps Yes, usage of biomass. it's possible. I am talking it from last 10 years. Now, any biomass. Now, first of all, we can even make agriculture economically more profitable. By using biotechnology, we can increase biomass. And from biomass, even we can make these pellets. And now from cotton straw, wheat straw, rice straw, bagasse, soybean, everything. Even from bamboo, we can make the small thing there, from particle, and we can use it in boiler. Then biomass, Napier grass is there. And now one is the grass is coming from Thailand. And they are claiming that within a year they can make 800 ton of biomass per year. And we can take that biomass into biodigester. We will get bio-CNG, bio-LNG, even we get hydrogen from that. So this is to be the, we can make this type of industry into the rural area for manufacturing, which is really important for the country. सर, एक तरफ हाइड्रोजन है जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, और दूसरी तरफ ईवीज हैं जो इज हियर एंड टुडे, इट्स वेरी रियल, इट्स हैपनिंग. इसमें वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स दैट वी सॉ रिसेंटली इज द डिस्कवरी ऑफ लिथियम डेपोसिट्स इन कश्मीर, व्हिच आवर पेपर रिपोर्टेड इज आल्सो गोइंग टू बी ऑक्शन्ड वेरी सून. हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस डेवलपमेंट फॉर इंडिया? देखिए, हमारे देश में जो लिथियम आयन बैटरी है, जिससे बैटरी बनती है, तो शुरुआत में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, अभी भी पड़ता है. हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट कर रहे हैं. और जब ये बैटरी बनी तब इसकी कॉस्ट $150 पर आवर और उसकी कैपेसिटी थी. अभी वो 115 पर आई है. और जल्दी ही अगर ये मिल जाएगा तो वो 100 पर आ जाएगी. तो पेट्रोल कार, पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक कॉस्ट सेम होगी. और आप अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है तो 20,000 रुपये पेट्रोल पे खर्चा करते होंगे, तो सेम उससे अच्छी गाड़ी आप 2,000 रुपये इलेक्ट्रिक पर खर्चा करेंगे, पोल्यूशन कुछ नहीं होगा. तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मार्केट खड़ा हो जाएगा. ट्रक, बसेस. मैं तो इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए दिल्ली जयपुर कोशिश कर रहा हूँ. तो ये निश्चित रूप से गेम चेंजर होगा. Tell us more about the electric highway you want to build from Delhi to Jaipur. Actually, it is on a preliminary level. Yesterday we have a meeting with principal advisor of our Prime Minister and all the scientists related with it. The idea is there will be a cable both the side, and first we will make it some buses, then electric truck on, because the lithium ion batteries capital cost is very high. So in this type of transport system, we don't need that. The most important problem in Indian industry, which challenge they are facing, is our logistic cost is 16%. And China logistic cost is 8 to 10%. USA and European countries, it is 10 to 12%. So the mission which is given by Prime Minister to us, by making good highways and changing in the fuel, we want to reduce the logistic cost from 16% to 9%. So this electric highway, electric as a fuel, is very, very cheap as compared with the petrol and diesel, the fossil fuel, and there is no pollution, and there are good roads. Now we are making the roads that Delhi to Dehradun 2 hours, Delhi to Haridwar 2 hours, Chennai to Bangalore 2 hours, Bangalore to Mysore at 12, Prime Minister is going to inaugurate 1 hour, then Delhi to Amritsar 4 hours, Delhi to Chandigarh 2.5 hours,
Even Delhi to Mumbai 12 hours. Even this all big cities there in Gujarat, Vadodara, Ahmedabad. It is all connected to this highway. And we are making a new highway from Surat to Nasik, Nasik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, Solapur to Kurnool. Then whatever the traffic from north to south, you don't need to go to Mumbai and Pune or Solapur, Kolhapur. Directly the north traffic will go to Kanyakumari, Chennai, Bangalore, Mysore, Kochi, Trivandrum from this side. So this is going to reduce the pollution in Mumbai also. So, sir, I want to come back to rural economy in a moment, but I want to talk about India becoming a car manufacturing hub, which you have said in the past and you reiterated more recently also, that you want India to become a major car manufacturing hub. जैसे आपने कहा number 1 बनाना है दुनिया में. What are the factors that are limiting us? And can we really make more cars than China does today? Actually, our two-wheeler manufacturer, Bajaj, TVS and Hero, 50% of their production is export. It's so popular in the world. Now, Maruti, Suzuki, Toyota, all the brands, even Ashok Leyland trucks, Tata trucks, they have big export. And today the size of the industry is 7.5 lakh crores. The problem is the decision taken by the government about scrapping. Now we are already import of aluminium, copper, steel, rubber and plastic. Now we have 30 crore vehicles. And after 15 years, now for government vehicle, we make it mandatory that they have to scrap. हमारी जो राज्य सरकार में मेरे पास वो डिपार्टमेंट है जो स्टेट कारपोरेशन की बसेस चलती है, मैं मजाक में कहता हूँ कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है उसमें और लोग भी ऊपर टप पे बैठ जाते हैं. उस हालत में क्या होगा मालूम नहीं. अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास 1.5 लाख बसेस है और मेरा प्रयास है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करके 10 लाख बसेस. अभी मैं बंगलोर में मैंने एक वॉल्वो की स्लीपर कोच लॉन्च किया. हवाई जहाज के बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लास जैसा था. फिर अभी उन्होंने बिजनेस जैसे भी यहाँ के दिल्ली से कोई नोएडा जा रहा है तो या दिल्ली से कानपुर जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो वो एयर होस्टेस होगी बस में, एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी, चाय कॉफी होगा, नाश्ता होगा, वो सो के लैपटॉप देखते हुए ऑल फैसिलिटी होगी और वो अपनी गाड़ी के बजाय आराम करते हुए जाएगा 2 घंटे में जयपुर हाईवे से. तो जब टोटल पब्लिक डबल डेकर बस आ गई. अभी मुंबई में मैंने इलेक्ट्रिक लेलैंड की डबल डेकर बस लॉन्च की, फिर डबल डेकर लग्जरी बस आएगी. तो रेलवे में जैसे वंदे मातरम आई, तो कभी कभी बहुत बड़े प्रमाण पर ये जो अभी रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ हूँ. ये गुड़गांव में रहते उनको पता है कि इस समय अगर गुड़गांव जाएगा तो क्या तकलीफ होती है. तो एक काम मैं कर रहा हूँ कि ये रोड पर जो ब्रिजेस है डायरेक्ट धौला कुआं से आगे निकलकर मानेसर तक 2 लेयर के ब्रिज बनाने का सोच रहा हूँ, डबल डेकर, कि एक ट्रैफिक डायरेक्ट ऊपर के ऊपर जाएगा. मैं अभी चेन्नई में बना रहा हूँ, पूना में बना रहा हूँ 3 ब्रिज. तो ये डबल डेकर है. अभी नागपुर में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया. हमने नीचे में रोड, ऊपर में हाईवे और उसके ऊपर में मेट्रो. अब ये है कि नीचे में रोड, ऊपर में हाईवे ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो. दूसरा हम लोग सोच रहे हैं कि धौला कुआं से मानेसर तक हमारे पास रोड है, बीच में एक पिलर पे रख के मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पॉन्ड्स होंगे, हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी है. अभी मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया, आज ही सुबह ऑस्ट्रिया एम्बेसडर और बड़ा डेलीगेशन आया था और वहाँ डॉफल मेयर है, प्यूमा है. तो मैं सबसे पहले आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत पोटेंशियल है. और मैं 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे ऑलरेडी मैंने अप्रूव कर दी है. अभी वाराणसी में बना रहा हूँ, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ उधर बना रहा हूँ. पूरे काफी टूरिस्ट स्पॉट्स है. मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी पर आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी लाइए, डेवलप करिए हर सिटी में. अभी मैं बेंगलोर में एक अध्ययन कर रहा हूँ कि हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 200 लोग ऊपर ही उड़ते उड़ते, क्योंकि बेंगलोर में जगह ही नहीं है.
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऊपर के ऊपर जाए। तो यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पोटेंशियल है, अब इसमें लोग इसका एडवांटेज ले और टेक्नोलॉजी लाए। मैं खुद उस डिपार्टमेंट में काम करूँ, बस पोर्ट बना रहा हूँ। अभी प्राइम लैंड है हर सिटी में। मैंने राज्य सरकार को प्रपोजल, लैंड तुम्हारी, डेवलपमेंट मेरी, आधा प्रॉफिट तुम्हारा, आधा मेरा। एयर कंडीशन बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बना रहे, मॉल्स, रेस्टोरेंट, सब चीजें वहां होगी, पार्किंग होगा, अच्छे बना रहे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जहां बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सबसे पहले 4 बातें जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी। 4 चीजें हुए बिना सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। मैं जितनी कुछ बात कर रहा हूं जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा ही है, प्रॉफिट है, मैं कोई लॉस मेकिंग बात नहीं कर रहा हूं। लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट करने के लिए सरकार है, पर जहां प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना। और अभी आपके मार्फत मैं आह्वान करूंगा, पत्रकार, छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी, कांस्टेबल, वो सबको इन्वेस्ट करूंगा कि अभी हमने इनविट में, NHI में, हमारे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड इशू निकाला था और 10 दिन का टाइम था। और 10 दिन के बाद मुंबई में जाकर वो घंटी बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में मैं बॉन्ड इशू क्लोज करने वाला था। पर जिस दिन हमने लॉन्च किया उसी दिन पहले 7 घंटे में, 7 आवर्स में हमारा 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। हम 8.05% इंटरेस्ट दे रहे पर ईयर। और मैंने उनको कहा कि इसमें एक करो कि मंथली इंटरेस्ट जमा करो, जो सीनियर सिटीजन सबके लिए है। तो हमारा बॉन्ड इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं। 2,70,000 करोड़ सरकार का बजट है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने दिया है, और 3-4 लाख करोड़ तो मैं ऐसे यूं खड़े कर सकता हूं, जो चाहे होता। ऑलरेडी मिल रहे पैसे हमारे पास, इन्वेस्टर लाइन में खड़े कि हमारा पैसा लो। Actually, speaking to Mr. Gadkari is always a pleasure because of this. He teaches us how to dream, how to scale. You know, he will tell, as he mentioned to Tata Motors, not कि आप 2 गुना कीजिए, आप 100 गुना कीजिए. You know, that is the. We have a little bit more time, sir. आप permit करेंगे तो we can take a couple of questions from the audience. No problem. If any of you would like to ask a question, please raise your hand and you can stand up, identify yourself and ask a question to Gadkari ji. Yes, please. सर, आपने इन हाइड्रोजन के बारे में बात किया, के बारे में बात किया। Please take that. आज की इंडिया में हम 50% से ज़्यादा एनर्जी के लिए कोल पे डिपेंडेंट है। कोल गैसिफिकेशन और कोल लिक्विफिकेशन एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी। अगर हम रिटेल पर्पस के लिए जो भी आपने एनर्जी सोर्सेज बताए, अगर हम उसको पुश करें, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए कोल गैसिफिकेशन, कोल लिक्विफिकेशन के ऊपर एम्फेसिस डालें, अगर उस 50-60% जो कोल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, अगर मैं उसको 5% भी कम कर पाया तो इट विल बी अ बिग सक्सेस। तो उस पर गवर्नमेंट का क्या फोकस है? क्या उसमें आगे हम कुछ सोचेंगे? देखिए, ये CBM के कोल बेल्ट मिथेन के गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला था। अभी बंगाल में दुर्गापुर में ये CBM टेक्नोलॉजी से CNG निकलता है और वो CNG पूरा ट्रक बसेस में यूज होता है। लो क्वालिटी कोल जो है, ऐसे कुछ ब्लॉक्स हमारे पास है और इसमें डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है स्पेशली इसमें काम करते हैं। उन ब्लॉक्स में हम बड़े प्रमाण पर कोल बेड मिथेन निकाल सकते हैं, जिससे CNG, LNG मिल सकता है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। दूसरा, हमारे देश में 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ओडिशा में जो फर्टिलाइजर प्लांट था, जो बंद पड़ा था, वहां अभी हमने कोल गैसिफिकेशन से यूरिया बना रहे हैं और कोल गैसिफिकेशन से 350 प्रोडक्ट बनते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो हमारे माइंस में लगता है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको एक बात बताता हूँ कि कोल से ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट को इनकरेज कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती थी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, क्योंकि ये ब्लॉक्स जहाँ है क्लियर करके सरकार इसको भी प्रोत्साहित कर रही है। ज़्यादातर कोल मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसमें काम करती है। पर मेरा विश्वास है कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, समुंदर है, ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट। तो कभी कभी लोग मुझे पूछते, तुम बोलते इलेक्ट्रिक,
फिर हाइड्रोजन, फिर बोलते हैं LNG। तुम इतना लाओगे तो गड़बड़ होगी। मैंने बोला तुम्हारे सब में जितना दम होगा इसके 10 गुना लोग भी काम करेंगे तो भी ये इंपोर्ट इतना बड़ा है। हमें इथेनॉल चिल्ला चिल्ला कर इतना कुछ का अभी भी 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी नहीं बन रही, जबकि 20% पेट्रोल में डाल रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमको निश्चित रूप से अल्टरनेटिव फ्यूल को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस कोल हमारे पास है। और लो क्वालिटी कोल जहाँ है वहाँ कोल गैसिफिकेशन भी होगा। कोल गैसिफिकेशन से बहुत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हम तैयार करेंगे। और दूसरी ओर जहाँ CBM है, कोल बेड मिथेन से, वो भी होगा। दोनों पे काम चल रहा है, उसकी गति भी बढ़ रही है और कोशिश हुई है। आपका बिल्कुल सही है, ये करना चाहिए। यूरिया, अभी नैनो यूरिया आया। अब मेरे खेत पे मैंने वो ड्रोन से नैनो यूरिया स्प्रेइंग किया। अब उसमें ऐसा है कि 1 एकड़ में 4 बैग यूरिया लगता है। और यूरिया अगर ड्रोन से स्प्रेइंग किया तो 2 बॉटल में काम होता है। तो 1 बॉटल की कीमत 1 बैग के बराबर है, तो 2 बोरे का सेविंग हो गया। तो आज नैनो यूरिया RCF ने के इतना पॉपुलर हुआ है और वो ड्रोन का स्प्रेइंग आ गया। तो उसमें एक है कि अगर हम लोग नीचे स्प्रे से मारते हैं जब फेंकते यूरिया, तो 75% यूरिया वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और अगर स्प्रेइंग से मारते हैं तो 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। तो टेक्नोलॉजी में जो बदल हुआ है, बिल्कुल कोल गैसिफिकेशन हमने करना चाहिए। उसमें भी ब्लॉक्स निकल रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से काम होगा। सर, एक क्वेश्चन आई हैव अबाउट हाईवेज। क्या इस साल वी विल गो बैक टू बीइंग एबल टू बिल्ड 50 किलोमीटर्स अ डे? नहीं, अभी तो 40 किलोमीटर क्या कोविड के कारण कुछ इम्पैक्ट्स है। So FY24 के लिए आपका व्हाट इज द टारगेट यू हैव गिवन? नहीं, टारगेट तो मैंने 60 किलोमीटर का टारगेट रखा है। अब वो क्या होता है कि टारगेट ये कभी भी बड़ा रखा जाता है। जैसे आप तय करेंगे कि भाई हमारा अखबार का सर्कुलेशन 1 लाख होना चाहिए, होता है 60,000। तो कभी कभी मीडिया में लोग उसको ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मैंने कमिट किया कि 60 किलोमीटर रोड होगा। तो इट्स नॉट माई कमिटमेंट, इट इज अ टारगेट फॉर NHI, फॉर माई मिनिस्ट्री, 60 किलोमीटर। पर इस साल 40 भी करना हो जाएगा तो भी अच्छा होगा, ऐसा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड हमें कुछ प्रॉब्लम आया था। Being mindful of time, we can take one last question. Yes, sir. सर, डेवलपमेंट और गति की बात कर रहे हैं आप। जो शानदार एक्सप्रेस वे आपने तैयार करे हैं, उसमें सर अड़चन यह आ रही है कि जो स्पीड लिमिट है बड़ी कम है। अब फरीदाबाद दिल्ली पे आते हुए 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के कैमरा लगाए हुए हैं। गाड़ी जा सकती है 100-125 के ऊपर, और उस पर हमारे को चलान देने पड़ते हैं सालाना 60,000 रुपया। बिकॉज इतनी कंफ्यूजन है, विद इन 100 मीटर्स 50 भी है, 60 भी है और 70 भी है। ये इनका प्रॉब्लम सही है। इसमें क्या है कि ये स्पीड तय करने का अधिकार मेरे विभाग का है, पर ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट निर्णय करके उनको भी गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि चेन्नई हाईकोर्ट ने निर्णय दे के रखा है कि इसके ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए। और ये आप थोड़ा सा दुख मत करिए, मैंने भी 3 बार फाइन भरा है। मुंबई में मेरी गाड़ी है, वर्ली बांद्रा सीलिंग पर 2 बार उसको फाइन लग गया। तो अभी ऐसा है कि हाईवे अच्छे हो गए और स्पीड लिमिट नहीं बदली है। अब मैं सब स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बुला रहा हूँ और मैं इसको नया स्पीड लिमिट के नॉर्म्स तैयार करके आपको जल्दी ही रिलीफ मिल जाएगा। और दिल्ली मुंबई हाईवे पर जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। तो हम जैसे एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे पे स्पीड कितनी, 8 लेन पे कितनी, 6 लेन पे कितनी, 4 लेन पर कितनी, 2 लेन फेव शोल्डर पे कितनी, ऐसा करके हम अलग अलग सिटी लिमिट में कितनी रखना, तो उसके सब इसको हम लोग नई कर रहे हैं। और हमने ये नई की नहीं और रोड अच्छे बना दिए। ये बीच के इसमें आपको तकलीफ हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है। अभी मैं नासिक में गया था, एक फ्लाईओवर बना है। फ्लाईओवर इज डिजाइन फॉर 100 किलोमीटर और पुलिस ने लगा दिया 60 किलोमीटर, लगा दिए कैमरे, लोग फाइन भर रहे हैं। तो मैंने कहा ये मैंने बनाया 100 को, तो आप क्यों ऐसा करते हो, बदल दो इसको। तो ये ऑलरेडी इस प्रकार की विसंगति है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी ही उसको दूर करेंगे।
Sir, और एक और मेरी रिक्वेस्ट है जिसमें आप हमको मदद करिए कि जो हेवी ट्रक्स है, बसेस है, वो लास्ट लेन में चले। लेन डिसिप्लिन ये हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ी समस्या है, और आप भी आपके तरफ से इनको कहिए कि जो बस है, ट्रक है, वो लास्ट लेन में चले। और अभी हमने इसके साइनेज लगाए। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं हमारे देश में, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 वयोवर्ग के 60% लड़के लड़कियां इसमें मरते हैं। हम इसको अभी तक सक्सेसफुली नहीं कम कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए लेन डिसिप्लिन के बारे में भी, जैसे स्पीड पे चलेंगे। अभी कल मैंने वो इस पे सोशल मीडिया में देखा कि एक ने एक गिलास में पानी भर के 180 किलोमीटर में गाड़ी चलाई, और वो पानी ऐसा ही था, और वो बड़ा गौरव से बता, देखो मैं 180 किलो में मैंने बोनेट पे रखा और मैं गया। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो स्पीड लिमिट है, जा तो सकते, मैंने खुद 180 किलोमीटर पे टेस्ट किया ये हाईवे, और मैंने पानी पिया उसमें कि भाई कुछ गड़बड़ होती है क्या। तो प्रॉब्लम है, पर सिक्योरिटी के हिसाब से जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसका कानून बना के उसका पालन करें। और लेन डिसिप्लिन के लिए आप भी लोगों तक ये बात समझाइए कि भाई जरूर इसका पालन करें, तो ये स्पीड में कोई एक्सीडेंट नहीं होंगे। और सर, there was a news that you're considering कि हाईवे पे any vehicle that is caught without third party insurance will be given third party insurance right there, and the price of it deducted from FASTag. Is the government considering such a move? ऐसा है, एक्चुअली क्या है कि अभी जो लाइसेंस, गाड़ी के कागज, हमने एक ई लॉकर बनाया और मोबाइल फोन पर है। अगर आपको कागज अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता हमारे इसमें शायद 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें ये फैसिलिटी का फ़ायदा लिया है। तो आपको अगर कोई, तो मोबाइल फ़ोन से निकल कर आप कागज बता सकते हैं पुलिस को। ये भी एक सजेशन है, पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ इसका। आपने कहा आपने सोशल मीडिया में कुछ देखा, क्या आप खुद सोशल मीडिया देख सकते हैं? अगर है तो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखते हैं? मैं देखता नहीं, पर अब मेरे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा, यानी इतना ये नहीं हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं था, पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा कि भाई आप सोशल मीडिया पे होने चाहिए। अब मैं इतना व्यक्ति करके बड़ा इनडिसिप्लिन हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं हूँ, पर मुझे ये सोशल मीडिया में मैं भाषण देता हूँ, आपका इंटरव्यू होता है, बाद में वो मेरे इस पे जाता है, तो मुझे 2-3 लाख रुपए महीना मिलने लगा। अब लोग मेरे को सुनते हैं। तो आज मैं बहुत से बार जाता तो मुझे अमेरिका के लोग बोलते कि हमने ये सुना है, इधर के, अब गांव के लोग छोटे छोटे प्लेन में बैठता हूं तो छोटे आके भाई ये भाषण सुना, वो सुना। तो ये इतनी स्ट्रांग है मीडिया, सोशल मीडिया, इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, पर मैं ज़्यादातर ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह में जो होता है, तो मैं वो इक्विपमेंट्स वगैरह जो मेरे इंटरेस्ट के विषय वो देखते रहता हूँ। गाने सुनता हूँ कभी यूट्यूब पर। Sir, you may or may not be on social media, but I can tell you that all of your speeches, especially the ones where you talk about the highways that are being built, they go viral on social media. There are people who attach music to it, and those are very widely watched around the country. But you know, it's a busy day for you. You need to leave for a flight also. So while there is so much more to talk, I think we'll have to wrap up. But Gadkari ji, it's always a real pleasure to speak with you. You always remind us about rural economy, about about the vastness of our country, about the need to serve, and it's always nice to be reminded of all of that, and it's always inspirational to hear about the big scale of your thoughts. Thank you so much for joining us today. Namaskar. Thank you. Ladies and gentlemen,